बड़ा दिल था, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्विक एंड इजी डेजर्ट रेसिपी को एक्सप्लोर करूं। मेरे डैड ने फ्रूट कस्टर्ड सजेस्ट किया है बनाने के लिए, सो मैंने आज ये रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कस्टर्ड बनाने के लिए ये 4 इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत है। फर्स्ट 1 कप ऑफ बाउल ऑफ मिल्क, 1 बाउल शुगर, क्योंकि मुझे 2 ही सिर्फ बाउल्स बनाने हैं कस्टर्ड के, सो मैंने 1 कप बाउल ऑफ मिल्क लिया है और हाफ कप ऑफ शुगर लिया है। कस्टर्ड पाउडर आपको जो मिलेगा अवेलेबल होगा वो यूज़ कीजिएगा, मैंने ये किया है। फ्रूट्स में आपको जो फ्रूट्स पसंद है वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे पोमोग्रेनेट और एप्पल पसंद है, मैंने यही 2 फ्रूट्स लिए हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, एज मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं, तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं तो चली इसे खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रुकी थी कब ये फ्रीजर से आएगा और मैं कब इसमें हमला बोलूंगी, तो मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड यस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जल्दी जरूर आऊंगी न्यू वीडियो के साथ, न्यू चीजें एक्सप्लोर करते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे। टाटा।